Om Jnanatimanandasya Kyanandana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna.
Krishna. We welcome all the devotees for today's Srimad Bhagavatam session. So we have His Grace Giriraj Prabhu with us. So Prabhuji will take the session. So I'll just share the screen, Prabhuji, and I'll make you the co-host. So we'll begin reading from 1:15:27. Sorry, Prabhu. I was just doing the quiz. Yes. What do you want me to do? You can share also, Prabhuji, or should I share? Just share, Prabhuji. You share. हरे कृष्णा. अच्छा, पहले आपने वो देखना है प्रभु, Quiz. So I think Ronnie Prabhu is in meeting, Prabhuji, and I don't have that rights. Okay, no problem. We can begin the reading. We'll share the quiz results after this. Okay. Okay, Prabhuji. So we'll share later. Prabhu, I've shared the results on the chat. I'm sorry. Okay. Chat pe. You can see. Vishwakaran Prabhu, can you show? जो चैट पे है वो स्क्रीन शेयर में दिखा दीजिए. It went away, Prabhu. I think वो updated भेजी होगी इन्होंने. हरे कृष्णा. So, okay, here shown. Okay, so we are 10 out of 10. 5 are attempted. Vedansh is number 1. Wonderful. Then Giriraj Das. Then Vrindavan Purandar Prabhu. Then Anupma Mataji. Okay. Who's the 5th one? 1, 2, 3, 4. It says 4 students only, Prabhuji, total. Oh. 4 अच्छा, students, अच्छा, 5 questions 5. Okay, I'm sorry. है ना? So जिन लोगों ने नहीं attempt की है, so we request them also to please attend the same. So एक ही उसमें tongue twister सा question था वो, जिसमें the wrong answer मुझे लगता है वही गलत हुआ होगा devotees का, जिनका एक wrong आ रहा है. Okay. So we'll begin our session. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Pancha Kalpatarubhescha Kripa Sindhubhaya Vachah Patitanam Pavnebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya, Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine, Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine, Nirvishesh Shunyavadi Pashatya Deshatarine, Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna. So, please excuse little bit of my voice. थोड़ा सा गला मेरा हल्का सा खराब है. So ये जो श्लोक है ये आप सब पढ़ रहे हैं हम लोग कि 15वां अध्याय इसका भागवतम का, और उसमें से ये जो श्लोक है ये बहुत ही एक भागवतम के महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक आता है. और पूरे भागवतम के ये दिस वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस. और मुझे रोनी प्रभु ने बताया कि आप लोगों ने कल पढ़ा था सबने, बट फ्यू डिवोटीज एक्सप्रेस्ड कि वी शुड रीड इट अगेन. सो गोइंग टू योर रिस्पेक्ट, सो वी आर रीडिंग इट अगेन. और ये जितना पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि कल पढ़ा कुछ और समझ में आएगा, आज पढ़ा कुछ और, बट बेसिकली जब हम बार बार शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उनके वचनों में हमारी जो श्रद्धा है वो और बढ़ती है. ये नहीं है हर बार सोचना चाहिए कि अब ये बोला, आज किसने बोला, आज किसी और ने बोला तो अभी अलग तरह से समझाएंगे. दैट मे और मे नॉट बी पॉसिबल, मे और मे बी देयर, बट मेन थिंग इज नॉट कि वी वांट टू हियर
different angles, but basically we want to repeat and get more shraddha in those script verses. तो ये श्रीमती माता जी भी बहुत उन्होंने हमारे सेशन लिए एक दो बार इन्हीं श्लोका के ऊपर, एंड सेइंग कि किस तरह से जब जीवन में कठिनाई आती है और जब हमें लगता है हमारा कोई और सहारा नहीं है, तो हम कृष्ण का और स्पेशली भगवत गीता का सहारा ले सकते हैं। क्योंकि इन श्लोकों के अंदर यही आता है कि अर्जुन ही रिमेम्बर्ड व्हाट वाज टोल्ड बाय श्री कृष्ण टू अर्जुन एट द टाइम ऑफ कुरुक्षेत्र वॉर. So he remembered all that. So if he could remember, because ये जितने भी पास टाइम्स होते हैं भगवान के भक्तों के साथ, इन सब में हमारे लिए शिक्षाएं छुपी होती हैं. तो इसमें शिक्षा ये छुपी है कि जब वो दोबारा उसमें आ गए, फिर से जब उनको पता चलता है कि भगवान जो है यहाँ से छोड़ के अपने धाम चले गए हैं, so with that lamentation, so he remembered and it gave him solace. तो ना हमारा भगवान से प्रेम इतना है, ना हमारी मुसीबतें इतनी हैं कि भगवान हमें मिले, हम उनके साथ रहे, उनके साथ युद्ध जीता और फिर भगवान चले गए, ना हमारी लिमिटेशन इतनी ज्यादा है ना. सो जब इतनी हाई परिस्थिति के ऊपर रहते हुए अर्जुन को ही फेल्ट सोलेस इन हिज हार्ट, उनको शांति मिली उनके हृदय को. तो अगर हम उन भगवत गीता के श्लोकों को और उन ज्ञान को याद करेंगे, तो हम जीवन की किसी भी परिस्थिति में हो, सो हम लोग आसानी से अपने आप को हौसला दे सकते हैं. और यही इसका जो मकसद है वो यही है. और उसी को रखते हुए तो ये जो श्लोक है ये हम पढ़ते हैं. देश कालार्थ युक्तानि हिततापो कुशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविंद अभितानि मे. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Now I am attracted to those instructions imparted by me by the personality of Godhead Govinda. One second. Because they are impregnated with instructions for relieving the burning heart in all circumstances of time and space. Again, I'll read. Now I am attracted to those instructions imparted to me by the personality of Godhead Govinda, because they are impregnated with instructions for relieving the burning heart in all circumstances of time and place. Actually, बहुत बार ISKCON में जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो हमें लगता है भगवत गीता हमारे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है. मैंने जो पढ़नी थी पढ़ ली, अब मेरा काम है कि मैं भगवत गीता के बारे में दूसरों को पढ़ाऊं और भगवत गीता का वितरण करूं. इसमें मेरे लिए कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं है. हाँ, दूसरों को पढ़ाने के लिए ये ग्रंथ बहुत अच्छा है. मैं दूसरों को समझा सकता हूँ इसमें किस तरह से क्या क्या दिया है, 5 तरह के तत्व समझाए हैं, कैसे अलग अलग गुणों में किससे क्या गुण है वो करना है, कर्म का ज्ञान क्या है, आत्मा, ये दूसरों को समझाने के लिए इट्स ए गुड बुक. हाँ, और वितरण करने के लिए गुड बुक. हाँ, बट ये इट इज ए वेरी बिग मिस्टेक ऑन आवर पार्ट टू इफ यू डोंट रीड भगवद गीता डेली और एटलीस्ट रेगुलरली. बिकॉज दिस हैज, अब यहाँ देखिए भागवतम बोल रही है कि बिकॉज जो इंस्ट्रक्शंस है भगवद गीता की, दे आर इम्प्रेग्नेटेड with instructions for relieving the burning heart in all circumstances of time and space. मतलब जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, उन परिस्थितियों में हमें सांत्वना देने के लिए, हमें संभालने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो भगवद गीता के अंदर. हमें कभी भी जो गोविंद देव जी के मुख से निकले हुए वचनों को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए कि ये नौसिखियों के लिए है, ये न्यू डिवोटीज के लिए है भगवत गीता, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हर जगह जाके दिसंबर आने वाला है, अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. मुझे नए भक्त आए, मैं उनके लिए DYS कोर्स करूंगा, मैं उनको इंट्रोडक्शन ऑफ भगवत गीता सिखाऊंगा, मैं उनको बताऊंगा भगवत गीता कैसे पढ़नी है. पर मेरे लिए तो मैं अब दूसरी पुस्तकें पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, मेरे लिए भगवत गीता का कोई स्थान नहीं है.
Like I can tell for, for all senior sannyasis whom I meet, read Bhagavad Gita regularly. Srimati Mataji read Bhagavad Gita every day. So many of them I know, they read Bhagavad Gita every day. But we, because as we come into Kanishta level, then suddenly we feel that our false ego drives us and we think we are now above Bhagavad Gita. It is for juniors and it is for distribution. So that will be a big mistake on our part and we will miss a very major part. So everything हमें इस संसार में रहने के लिए, इस संसार में रहते हुए अपनी भक्ति को और विकसित करने के लिए, इस संसार में रहते हुए भक्तों की संख्या को बढ़ाने के लिए हर एक चीज की इंस्ट्रक्शन भगवत गीता में दी हुई है ना। तो दूसरों को ही मानते रहेंगे और खुद पे उपकार नहीं करेंगे तो उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं उठा पाएंगे। Purport. Herein Arjun refers to the instructions of Bhagavad Gita which was imparted to him by the Lord on the battlefield of Kurukshetra. The Lord left behind him the instructions of the Bhagavad Gita not for the benefit of Arjun alone, but also for all time and in all lands. The Bhagavad Gita, being spoken by Supreme Personality of Godhead, is the essence of all Vedic wisdom. It is nicely presented by the Lord himself for all who have very little time to go through the vast Vedic literatures like Upanishad, Puran, Vedanta Sutra. It is put within the study of the great historical epic Mahabharata, which was especially prepared for the less intelligent class, namely the women, the laborers, and those who are worthless descendants of Brahmins, Kshatriyas, and higher sections of Vaishya, which means us. ये जब भी इस तरह की चीजें आती हैं, we should not look at others and think, yes, ये कर्मियों की बातें हो रही हैं या विकर्मियों की बातें हो रही हैं। ये हमें अपने ऊपर देखना चाहिए कि ये मेरी बात हो रही है। The problems which arose in the heart of Arjun on the battlefield of Kurukshetra was solved by the teachings of Bhagavad Gita. Again, after the departure of the Lord from the vision of earthly people, when Arjun was face to face with being vanquished in his acquired power and prominence, he wanted again to remember the great teachings of Bhagavad Gita, just to teach all concerned that the Bhagavad Gita can be consulted in all critical times, not only for solace from all kinds of mental agonies, but also for the way out of the great entanglements which may embarrass one in some critical hour. तो ये तो कोई हमारे लिए अछूती बात नहीं है कि ना केवल हमें मुसीबत के लिए है, बल्कि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिसमें हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। आप लोगों का तो पता नहीं, पर मेरे साथ ये बहुत जल्दी जल्दी होता है। सो उन परिस्थितियों में क्या करना है, किसकी शरण लेनी है, तो वो भगवत गीता की लेनी है। अगर हम अपने मन की शरण लेंगे तो काम नहीं चलेगा। ये हमेशा याद रखिए कि हमारे लेवल के ऊपर हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो है वो हमारा मन ही है। क्यों नहीं भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं? मन के कारण, क्योंकि मन की सुनते हैं। मन कहता है कि रात को देर से सोए हैं, जल्दी उठने की इतनी कोई जरूरत नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी। मन ये नहीं सुनाता कि श्रील प्रभुपाद 2.5 घंटे सोते थे, 2 घंटे सो के भी कार्य करते थे। मन कहता है अब आप वृद्ध हो रहे हैं। और इस तरह से मन जो है ये हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि क्योंकि ज्ञान में और विज्ञान में यही फर्क होता है कि नॉलेज और रियलाइजेशन हैज बिग डिफरेंस। सो आई मे हैव नॉलेज, मुझे भगवत गीता आती है, सारे श्लोक आते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, पर मुझे उसका कोई साक्षात्कार नहीं, उसकी कोई रियलाइजेशन नहीं। सो देन अभी जैसे श्रीमती माता जी, शी वॉज नॉट वेल एंड शी टुक ए क्लास आफ्टर आई थिंक maybe 6-7 weeks, and then she was explaining, sharing कि उनका हेल्थ प्रॉब्लम रही, उसमें उन्होंने क्या किया, how she was about to die and what did she do and what saved her and what didn't work out। और जो भक्त रोज की 64 माला कम से कम करता है, उनका साक्षात्कार ये रहा कि मैं ठीक से नाम जप नहीं करते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं।
डोंट डाई नाम अपराधी इफ यू वांट टू बी प्रभुपाद होगा। तो वो तो अब शुद्ध भक्तों के शुद्ध विचार हम नहीं कह सकते, पर जैसे पिछले 4-5 दिन से आई वॉज नॉट वेल एंड आई टोल्ड माता जी दैट आई फील सो अशेम्ड, क्योंकि what she did and she explained why she was able to do even उस समय के अंदर भी जब उनकी स्थिति, शरीर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, वो क्यों बहुत सारी चीजें कर पाई, क्योंकि रिजिडली शी वाज डूइंग ऑल दीज थिंग्स रिजिडली थ्रू सो मेनी इयर्स। और मेरी परिस्थिति ऐसी है कि अब छोटी सी भी बीमारी है, कुछ हो जाता है तो सारा कुछ छूट जाता है ना। सो इसीलिए हाँ, अगर हम जब भी हमें कठिनाई आती है, तकलीफ आती है, तो कभी भी अपने मन की बात नहीं सुननी चाहिए। इधर वी टेक कंसल्टेशन ऑफ ए सीनियर डिवोटी, और उसमें कई बार हमें एम्बैरेसमेंट होती है अपना मनोभाव शेयर करते हुए, क्योंकि हमें शर्म आती है कि हम क्या बोलेंगे, क्योंकि वो तो मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं। बट अब सोचना ये है कि हमें अपनी इमेज का सोचना है कि अपनी असलियत का सोचना है ना। इमेज के बारे में सोचेंगे तो कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और भक्ति में आगे बढ़ने का तरीका यही होता है कि हम अपना जो हृदय है किसी सीनियर के साथ शेयर करें। हाँ, और जो सीनियर है सो दे ऑल्सो टेक शेल्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ भगवत गीता, बिकॉज दे आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। सो हमारा तो भगवत गीता में भी इतनी श्रद्धा नहीं है, पर तब भी हम पढ़ सकते हैं और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ लिखा है भगवत गीता, तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमें भगवत गीता भी क्या बोलती है और हमें किस श्लोक की शरण लेनी है वो भी हमें नहीं पता है। इसलिए हमारे लेवल के ऊपर वी शुड टेक शेल्टर ऑफ ए सीनियर डिवोटी। मेन थिंग इज नेवर टेक शेल्टर ऑफ योर मन, नेवर लेट आवर माइंड डिक्टेट टू मी बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन दिस इज ओके, बिकॉज दिस इज देयर दिस इज ओके, लाइक दिस। सो ये बहुत जरूरी है, और हमेशा जब भी इस तरह की कठिनाइयां आती हैं, इट इज गुड टू ओपन भगवद गीता एंड रीड। Sorry, Krishna. The merciful Lord left behind him the great teachings of Bhagavad Gita so that one can take instructions of the Lord even when he is not visible to the material eyesight, which is our condition. Material senses cannot have any estimation of the Supreme Lord, but by his inconceivable power, the Lord can incarnate himself to the sense perception of the conditioned souls in a suitable manner through the agency of matter, which is also another form of Lord's manifested energy. कि हम भगवान को ना देख पाए, भगवान हमारी नजरों के सामने ना हो, पर अगर भगवान हमारे पे कृपा करेंगे तो वो हमारे दृष्टि के सामने आ सकते हैं। हाँ, क्योंकि जो भौतिक ये जो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, ये भी भगवान की शक्ति है ना। उनकी अंतरंगा शक्ति भी है, बहिरंगा शक्ति भी है, ठीक है। वो अंतरंगा शक्ति में रहते हैं हमेशा, बट क्योंकि वो मालिक हैं, दोनों के ही स्वामी हैं, अंतरंगा के भी बहिरंगा के भी, तो बहिरंगा में भी प्रकट हो सकते हैं। उनको उसमें उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि बहिरंगा शक्ति से हमारे सामने दृष्टिपात होना, कि उनका हमें दर्शन हो जाए। Thus, the Bhagavad Gita, or any authentic scriptural sound representation of the Lord, is also the incarnation of the Lord. There is no difference between the sound representation of the Lord and the Lord himself. One can derive the same benefit from Bhagavad Gita as Arjuna did in personal presence of the Lord. तो अब ये क्या है कि एक भगवान के शब्द में जब भगवान ने बोले, अगर वो और भगवान में कोई फर्क नहीं है, भगवान और भगवान की सेवा में कोई फर्क नहीं है, भगवान और भगवान के स्मरण में कोई फर्क नहीं है। तीनों में से कोई भी चीज हमारे पास आती है तो हम हमें भगवान का संग मिला है। तो चाहे वो भगवान का स्मरण हो, चाहे वो भगवान की सेवा हो, चाहे वो भगवान के मुख से निकले हुए शब्द हो, किसी भी तरह से इन तीनों का कॉम्बिनेशन में से कुछ ही के साथ भी रहते हैं तो हम भगवान के साथ हैं। तो ये हमें बात इसमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए हमें। The faithful human being who is desirous of being liberated from the clutches of material existence can very easily take advantage of the Bhagavad Gita
And with this in view, the Lord instructed Arjun as if Arjun were in need of it. क्योंकि वो जो अर्जुन है वो भगवान के नित्य पार्षद है. हाँ, हर एक जब जिस यूनिवर्स में, हाँ, भगवान भगवत गीता का जो पास टाइम जो लीला होती है, उसमें ऐसा नहीं है कि अलग अलग आत्माएं अर्जुन का पद लेती हैं और करती हैं. ऐसा नहीं. ये जो है अर्जुन जो है, प्रभुपाद बताते हैं कि ये भगवान के नित्य पार्षद है. हर जहां भी पास टाइम होता है, हाँ, वहां पर यही अर्जुन भगवान के साथ आते हैं. कोई और नहीं आता है. भगवान के नित्य पार्षद है भगवान के. कि होते हुए, हाँ, उन्होंने कारण, हाँ, उनको योग माया में डाल के भगवान ने भगवत गीता बोली, हाँ, ताकि हम लोग समझ पाए, हाँ, भगवान को. और ये प्रभुपाद 1 2 3 4 5 ये प्रभुपाद, हाँ, वो जो पांचों तत्व हैं जो भगवत गीता में समझाए गए हैं, उनको दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं और नोट कर रहे हैं दोबारा. In the Bhagavad Gita, 5 important factors of knowledge have been given, delineated, pertaining to the Supreme Lord, the living being, the nature, time and space, and the process of activity. So Bhagwan और जीव और प्रकृति और समय और कर्म. Out of these, the Supreme Lord and the living being are qualitatively one. The difference between the two has been analyzed as a difference between the whole and the part and the parcel. Nature is inert matter displaying the interaction of 3 different modes, and the eternal time and unlimited space are considered to be beyond the existence of material nature. Activities of the living being are different varieties of aptitudes which can entrap or liberate the living being within and without material nature. So ये सब बातें हमने बहुत बार पढ़ी हैं, मैं इनको बार बार नहीं दोहरा रहा, पर यही है कि जो कर्म है वो हमें बांध भी सकते हैं, हमें मुक्ति भी दिला सकते हैं. ये हम पे डिपेंड करता है जीव के ऊपर कि वो किस तरह के कर्म करता है. कर्म करता है, विकर्म करता है कि अकर्म करता है. All these subject matters are concisely discussed in Bhagavad Gita, and later the subject matters are elaborated in Srimad Bhagavatam for further enlightenment. Out of the 5 subjects, the Supreme Lord, the living entity, nature, and time and space are eternal. But the living entity, nature, and time are under the direction of the Supreme Lord, who is the absolute and completely independent of any other control. The Supreme Lord is the supreme controller. The material activity of the living being is beginningless. But it can be rectified by transferal into the spiritual quality. Thus, it can cease its material qualitative reactions. Both the Lord and the living entity are cognizant, and both have the sense of identification or being conscious as a living force. But the living being under the condition of material nature, called Mahatattva, misidentifies himself as being different from the Lord. The whole scheme of Vedic wisdom is targeted to the aim of eradicating such a misconception and thus liberating the living being from the illusion of material identification. When such an illusion is eradicated by knowledge and renunciation, the living beings are responsible. When such an illusion is eradicated by knowledge and renunciation, ज्ञान और वैराग्य, ये हम 15वें अध्याय में पढ़ते हैं भगवद गीता के. The living beings are responsible actors and enjoyers also. The sense of enjoyment in the Lord is real, but such a sense in the living being is a sort of wishful desire only, because he's not really enjoying, he's really suffering. I am thinking by buying a house, I'm enjoying, but I'm suffering because my consciousness is into it. I'm thinking I buy a new phone or a new laptop or a new car. I'm trying to be enjoyer, but what is happening? I'm suffering
because I am identifying my happiness in those products. Buying those products or staying on those products is not a problem. किसी वस्तु को लेने में, खरीदने में अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर मुझे ये लगता है कि ये वस्तु मुझे आनंद देगी, इससे मुझे आनंद प्राप्त होगा, तो वो क्या है? वो मेरी मूर्खता है. उसमें मैं कि आई एम इन इल्यूजन दैट टाइम. कि इफ आई थिंक कि दिस प्रोडक्ट विल गिव मी हैप्पीनेस. जो भी है संसार में, जिसको भी हम अपना समझते हैं, चाहे अपनी वस्तु हो, अपना परिवार हो, अगर आप समझते हैं कि ये व्यक्ति या ये वस्तु मुझे सुख देगी, तो हम मोह में हैं. हाँ, जो हमारा उत्तरदायित्व है वो करना ठीक है, बट हमें ये पता होना चाहिए सुख केवल मुझे कृष्ण दे सकते हैं, गुरुदेव दे सकते हैं, आचार्य दे सकते हैं, भगवान के भक्तों का संग मिल सकता है. और भगवान के भक्तों का संग का भी मतलब यही है कि जो उनके संग में मिले तो कृष्ण कथा करें, है ना, कीर्तन करें, लाइक दिस. अगर उनके सामने रख के अगर हमने प्रजल्पाई करना है तो वो इट इज नॉट साधु संग. तो ये जो चीजें हैं ये मुझे सुख दे सकती हैं. मेरा घर, मेरे परिवार, मेरा फोन, मेरा लैपटॉप, मेरी कार, कोई भी वस्तु मुझे सुख नहीं दे सकती. ये बहुत जरूरी है समझने के लिए. जो करना है वो करना है, वो ठीक है, पर ये नहीं होना चाहिए कि सुख ये वस्तु देगी. सुख कुछ नहीं दे सकता आपको. सुख केवल आपको कृष्ण दे सकते हैं, भगवान के भक्त दे सकते हैं, गुरुदेव दे सकते हैं, आचार्य दे सकते हैं. और गुरुदेव आचार्य भी आपको सुख का रास्ता दिखा सकते हैं. अगर उस रास्ते पे चलेंगे तो सुख मिलेगा, है ना. हो सकता है मटेरियली मे नॉट बी कंफर्टेबल, जो बोलते हैं हम श्रेयस और प्रेयस. सो हो सकता है शॉर्ट टर्म के ऊपर, जैसे बच्चे को फोर्स करते हैं कि पढ़ाई करो, उसका स्कूल में जाने का मन नहीं है, तो उसको लग सकता है कि मेरे को कष्ट मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है. बट जब वो आगे आगे बढ़ता है, उसको समझ में आता है कि धक्का दिया मुझे, माता पिता ने ट्यूशन पढ़ाई, सब कुछ किया, तो ये सब मेरे हित के लिए था, एंड आई गॉट बेनिफिट फ्रॉम इट. सो एटलीस्ट इतना विश्वास हमें गुरुदेव और आचार्यों के निर्देशों के ऊपर होना चाहिए, लाइक दिस. And gradually we will find happiness, not happiness, we'll find bliss there in those instructions. We'll find because they are for our soul. They're not to benefit my gross body or even my subtle body, like this. इसीलिए कई बार कोई चीज भक्त बोलते हैं, सीनियर वैष्णव, शिष्य गुरु, दीक्षा गुरु बोलते हैं, कई बार हमें मन पे बड़ी चोट लगती है, क्योंकि हमारा विचार कुछ और है और वो कुछ और बोल रहे हैं. तो उस वक्त क्या सोचना चाहिए कि वो चोट हमें नहीं लगी है, बल्कि जो सीनियर वैष्णव हैं, जो शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, वो मेरे जो मिथ्या, जो मेरा जो अहंकार है, उसको छेदने का प्रयास कर रहे हैं, लाइक दिस. तो इस तरह से जो हम भक्ति के ये जो सूक्ष्म तरीके हैं, इनको समझ में पाएंगे, तब हम पाएंगे कि हम कि जो गोविंद देव जी कहते हैं सुसुखम कर तुम अव्ययम, उसका जो साक्षात्कार है वो नहीं होगा. क्योंकि अदरवाइज हम कह सकते हैं कि लिख तो रहे हैं सुसुखम कर तुम अव्ययम, पर मैं खुद ही सुसुखम अव्ययम नहीं हूं, तो मैं दूसरे को क्या बोलूंगा. और ये सत्य है ना. इसीलिए हमारे प्रचार में या हमारे वाक में इतनी शक्ति नहीं रहती है ना. इसीलिए गुरुदेव या आचार्य बोलते हैं कि वो वचन बोलिए जो आपने गुरुदेव से, विष्णु वैष्णव से, आचार्य सुने हैं. और जब बोलते हैं तो उनको रेफरेंस दीजिए. अगर आप ये सोच के बोल रहे हैं कि बोल तो मैं उनका रहा हूं, पर अंदर से सोच रहे हैं कि इम्प्रेस ये लोग मेरे से होंगे, है ना, मैं बोल वो, हाँ ठीक है, मैं बोल वो रहा हूँ जो प्रभुपाद से सुना, गुरु महाराज से सुना, पर मैं उनको रेफरेंस नहीं दे रहा हूं. तो इसका क्या मतलब है कि मैं वो खुद लेना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू एंजॉय माई सेल्फ, आई डोंट वॉन्ट टू गिव रेफरेंस. प्रभु जी, मैंने वो क्लास में इनसे सुना था, मैंने सुना था प्रभुपाद ने ऐसे बोला, मैंने सुना गुरु महाराज ने ऐसे बोला. नहीं, हम बोलते हैं जैसे सत्य वचन हो, इसका ये मतलब है, इसका ऐसे है, इसका ऐसे, विदाउट गिविंग रेफरेंस. सो दैट मीन्स आई एम कोटिंग गुरुदेव विदाउट रेफरेंस. आई वॉन्ट टू एंजॉय, उनसे लेके मैं गुरु भोगी बनना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू एंजॉय देम. But we are not supposed to enjoy. We are supposed to serve, because eternally we have to serve. If we cannot become a good servant, we cannot become a good devotee. ये हमेशा याद रखिए. अगर अच्छे सेवक नहीं बन सकते, अच्छे भक्त कभी नहीं बन सकते. तो उसके लिए हमारा उचित मनोभाव होना जरूरी है.
जो प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बोलते हैं कि इट इज द एटीट्यूड ऑफ ए डिवोटी which makes him progress. Not how many rounds I am chanting, how many verses I remember. It is always the attitude of a devotee which makes Krishna arranges things so you progress, or arranges things you stay at that level only, or even come down. It is so. Our attitude is very important. In the Bhagavad Gita, in the Bhagavad Gita, the Lord and the living entities are both described as Sanatan or eternal. And the Lord's abode, far beyond the material sky, is also described as Sanatan. The living being is invited to live in the Sanatan existence of the Lord, and the process which can help a living being to approach the Lord's abode, where the liberated activity of the soul is exhibited, is called Sanatan Dharma. ये देखिए, ये क्या-क्या डेफिनेशन बोलते हैं पॉलिटिशियन लोग और उन पे लड़ाइयाँ करते हैं. तो यही नहीं पता सनातन धर्म क्या है. कोई कह रहा है सनातन धर्म छोड़ दो, कोई कह रहा है सनातन धर्म कैसे छोड़ दे. तो सनातन धर्म क्या है कि जहाँ पर जो जीव है वो सनातन है, जो भगवान है वो सनातन है. जहाँ पर भक्त सनातन रूप से भगवान के सनातन समय तक भगवान की सेवा कर सकता है, भगवान के संग रह सकता है. और जो धर्म आपको या जो भी क्या बोल सकते हैं एक्शंस आपको वहां ले जा सकते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं सनातन धर्म. लाइक दिस. सो दैट प्रोसेस that process which can help a living being to approach the Lord's abode, where the liberated activity of the soul is exhibited, is called Sanatan Dharma. इसीलिए प्रभुपाद के ग्रंथों को बहुत प्रपर्ट को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए. One cannot, however, reach the eternal abode of the Lord without being free from the misconception of material identification. And the Bhagavad Gita gives us the clue how to achieve this stage of perfection. One phal of reading Bhagavad Gita is the vairagya comes. Because जब हम समय की बात करते हैं, मृत्यु की बात करते हैं, you find that there is an automatic vairagya which comes in the heart. इसका भगवद गीता पढ़ने का एक बहुत सारे बेनिफिट है. एक बेनिफिट ये है कि आप में वैराग्य उत्पन्न होता है, क्योंकि you start understanding what is what. Just by hearing it, vairagya comes. The process of being liberated from the misconception of material identification is called in different stages: fruitive activities, empiric philosophy, and devotional service, which means karma kand, jnana, and bhakti, up to the transcendental realization. Such transcendental realization is made possible by dovetailing all the above items in relation with the Lord. Prescribed duties of the human being, as directed in the Vedas, can gradually purify the sinful mind of the conditioned soul and raise him to the stage of knowledge. The purified stage of acquiring knowledge becomes the basis of devotional service to the Lord. As long as one is engaged in researching the solution of the problems of life, he is called jnana. His knowledge is called jnana because he's a seeker. He's seeking or purified knowledge. But on realizing the actual solution of life, one becomes situated in devotional service of the Lord. Brahma bhuta prasannatma na sochti na kanshati sama sarvebeshu bhuteshu mad bhaktim labate param. Then after that, when one reaches a Brahma bhuta stage, then bhakti starts. The Bhagavad Gita begins with the problems of life by discriminating the soul from the elements of matter and proves by all reason and argument that the soul is indestructible in all circumstances and the outer covering of the matter, the body and the mind, change for another term of material existence, which is full of miseries. The Bhagavad Gita is therefore meant for terminating all different kinds of miseries. And Arjun took shelter of this great knowledge, which had been imparted to him during the Kurukshetra battle. So, वही जो हमने प्रभुपाद जो है वो इसी बात को दोहरा रहे हैं कि किसी भी तरह के हमारी परिस्थितियां हो जीवन में, किसी भी तरह की परेशानियां हो, कुछ भी आए,
So it is most important at that time to take shelter of Bhagavad Gita. और भागवतम भी बोल सकते हैं. Bhagavatam is also non-different from Bhagavad Gita, but Bhagavad Gita is very concise. Everything is given in a very concise manner, philosophically. It is not, you will not be lost in a katha, which shloka, what to do. But here, very concisely, in just 700 shlokas, everything of the whole Vedic knowledge is given. So, like I said, that please do not take Bhagavad Gita lightly, and don't think it is just for distribution and to teach to others, but to also apply and read the same principle in our life also. Padam padam yapadidam. कि कब जीवन में क्या आ जाए कुछ नहीं पता. जितना भगवद गीता को रोज पढ़ेंगे, उनके श्लोकों को पढ़ेंगे, उनके तात्पर्यों को पढ़ेंगे, our intelligence will get sharpened and sharpened and sharpened. And when those circumstances happen, we will be much more, what should I say, fortified. हम उससे अस्त होंगे, उनसे, उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए. This is the thing. Hare Krishna. So it's already 8:20. So thank you so much. It was so nice to read Bhagavatam with all of you. And this very wonderful shloka. अगला श्लोक भी कल का जो पढ़ेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है. और मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये श्लोक और इसका जो तात्पर्य, इसको फिर से पढ़िए. इसको बार बार पढ़िए, हर एकादशी पे पढ़िए. और ये श्लोक आपको भगवद गीता के लिए, भागवतम के लिए, it can develop faith for us, for them. Hare Krishna. Thank you so very much. I will end the session now. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Granthar Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Gita Upanishad ki jai, Ananta Koti Vaishnavrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hare Krishna.